start with in basics. You have to tell me where to start from the basics. You have to कुछ तो बताओगे. सर अगर एमवी हिंडशिप अभी शुरू करें तो एक बार एमवी हिंडशिप का करा दो, और उसमें जैसे उस दिन वो 3-4 फॉर्मूले हम यूज कर रहे थे तो उसका एक बार बता दो. Okay, so you want me to do that. The formulas of MV Hinship. All right. उसके अलावा कुछ और? जो उस दिन हम वो सम आपने करवाया था ना, उसमें एमसीटीसी वगैरह और वो 2-4 चीजें यूज करी थी हमने. ओके. एक बार वो थोड़ा वो वाले बेसिक्स सर, जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट इंक्लूड हो जाता है सर. ओके, ठीक है, ठीक है, फाइन. स्टेबिलिटी वाला पार्ट. So from basically from 15th onwards, what we'll be doing will be dry docking. That is the big one that we have. Okay, so we'll be doing dry docking, and dry docking, we'll have grounding, we'll have trim A. So those are the topics that we will be having this time. All right, so you want me to revise that? Okay, so let me do the trim A formulas. Trim A. Trim A basically means any ship. A is any vessel or A ship. So that means the data will be provided in the question. So if you have a data which is provided to you in the question, then this is our water line. This is center of flotation. This is LCF. And this is the cargo W, which is loaded at a particular G. So GF becomes the lever through which the W is acting downward. That is the cargo being loaded. So therefore, the formulas that we'll be using. So mean sinkage is given by W upon TPC. W is in tons, TPC is in tons per centimeter. So centimeter goes on top. So this becomes the mean sinkage formula.
hydrostatic draft is draft aft minus stern trim, head trim is plus, correction, and correction is trim into LCF upon LBP. This gives us the hydrostatic draft minus for a stern trim plus for a head trim. Difference of hydrostatic drafts. Hydrostatic draft 1, difference hydrostatic draft 2 will give us mean sinkage or rise. This is also mean sinkage or rise, depending on whichever be the case. ये मेन सिंकेज डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है आपने? mean sinkage or थर्ड वाला or third mean sinkage or rise, mean rise. So depending on whichever is the case, if it's a discharging case, then it will be a rise. If it's a loading case, then it will be a sinkage. सर ये हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में ड्राफ्ट ऑफ माइनस ब्रैकेट में क्या है? Minus stern trim for minus, head trim for plus. If it's a head trim, then it's a plus. If it's a stern trim, it's a minus. So initial trim 1, difference final trim 2. Trim 1, difference trim 2 will give you TC. That is total change in trim or trim cost. Trim cost is equal to trimming moment upon MCTC. And trimming moment is a product of the force, that is W, into the lever through which it is used, D. D is nothing but GF upon MCTC. So trimming moment is small w into D, and D is nothing but the GF, the lever. This is the D. Where G is the center of gravity of the cargo in the hold, and F is the center of rotation of the ship. G is the COG of the cargo in the hold. कहाँ पे वो लोड या डिस्चार्ज हो रहा है वो. F is the COF of the ship. So ये हमें TC देगा. That is W into D upon MCTC. अब MCTC पे आते हैं. MCTC जनरली तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, बट अगर नहीं दिया होता है तो बॉक्स शेप वेसल के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला
W into GML upon 100L. And this formula has got to be used if kg is given in the question. And this is also approximately equal to W into BML upon 100L. And this will be used when this is not given in the question. Where W is the displacement of the vessel, capital W, L is the length, BML is the vertical distance between center of buoyancy and longitudinal metacenter. GML is the vertical distance between center of gravity and longitudinal metacenter. Both are vertical distances. So ये हमें MCTC दे देगा, यहाँ से हमें TC मिल जाएगा. एक बार TC मिल गया तो TA, change in trim aft, is TC, total change in trim or trim cost, into LCF upon LBP. Similarly, TF is equal to TC into FPF, forward perpendicular to center of rotation, upon LBP, where FPF is nothing but LBP minus LCF. This will give you TF, change in trim forward. Also, TF is equal to TC minus TA. And finally, you draw the drafts table. That's your 9th formula. सर ये LBP माइनस LCF से जो वैल्यू आ रहा है वो है क्या सर? वो है ये आगे की लेंथ, ये. ओके, This is the one that is forward perpendicular to center of rotation. और सर ये GML और BML जो है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी वो पॉइंट सेम रहता है. मेटासेंट्रिक बस या तो लॉन्जिट्यूडनल होता है या ट्रांसवर्स होता है, राइट? MT और या ML. Well, I'm not saying center of gravity and center of buoyancy same होता है, वो different भी हो सकता है. मतलब लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंट भी हो सकता है. डिफरेंस होता ही डिफरेंट है, वो होता ही डिफरेंट है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता MCTC की वैल्यू में, ज्यादा अंतर नहीं आएगा. सर वो डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे डिफरेंट है? ओके, अभी नहीं, जब उसके जब हम वो एक्सरसाइज करेंगे, वो हमारे सिलेबस में है, वो अगले महीने में आएगा, तो जब हम एक्सेस करेंगे उस वक्त मैं वो एक्सप्लेन करूंगा. ओके.
एक मिनट, मैंने शायद एक्सप्लेन किया था कि नहीं, देखने दो मुझे कौन से महीने में आएगा। वो आएगा ये, मैंने आपको अभी जब ये सिम्पसन करा रहा था तो मैंने कराया तो था एक्सेस। व्हेन आई वाज डूइंग सिम्पसन मैंने आपके बैच से किया है ना कि नहीं किया? सिम्पसन किया है हमने। हाँ, तो उसके बाद जब तो उससे पहले मैंने वही तो किया था जो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर। वो जो मैंने शुरुआत करी थी वो केएमटी से करी थी, तो उसमें मैंने सारा एक्सेस के बारे में समझाया तो था, लॉन्जिट्यूडनल। आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू, ट्रांसवर्स एक्सेस क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सेस क्या होती है, के बी, बीएमटी, बीएमएल, ये मैंने बताया था। यू रिमेम्बर शिप को करके, स्विंगिंग शिप, रिमेम्बर दिस और नो? एंड दिस कुछ याद आया कि नहीं? मैं सर नहीं किया था। हाँ जी, सर जब मैंने स्टार्ट किया था 15 मई को, यू रिमेम्बर आई स्टार्टेड 15 मई विद एक्सेस। सर ये एक्सप्लेन नहीं किया था ऐसे। ओके, चलो ठीक है, ओके, मैं करूंगा। सो ड्राफ्ट टेबल, forward, aft. So these will be my initial drafts. So let's say my drafts are forward 4 meters, supposing aft is 5 meters. Then इसमें mean sinkage or rise. So plus sinkage, plus sinkage. If it's a rise, then there'll be a minus rise, minus rise. So ये minus rise हो गया। फिर आ गया TFTA, आगे में TF लगेगा, पीछे में TA लगेगा। अगर मैं डाउन बाय हेड जा रहा हूं तो TF का साइन क्या होगा? प्लस। अगर मेरा फॉरवर्ड का साइन प्लस है तो आफ्ट टीए का साइन क्या होगा? माइनस। क्यों? क्योंकि मेरा बाव नीचे जा रहा है। अगर बाव नीचे जा रहा है तो आफ्ट ऊपर उठेगा, तो आगे का प्लस टीए, पीछे का माइनस टीए। अगर मैं आगे से डिस्चार्जिंग कर रहा हूं तो मेरा बाव उठेगा, तो टीएफ का साइन विल बी माइनस। अगर टीएफ का साइन माइनस तो टीए का साइन प्लस। ये मुझे देगा ड्राफ्ट फॉरवर्ड, ड्राफ्ट आफ्ट। सर ये मेन सिंकेज में क्या स्टर्न और नीचे आ क्या है सर? सिंकेज इज एस, राइज इज आर। अगर मैं लोडिंग कर रहा हूं तो प्लस एस होगा, अगर मैं डिस्चार्जिंग कर रहा हूं तो माइनस आर होगा। So if I'm loading, then there is a sinkage. Then bodily मैं सिंक करूंगा, कहीं पे भी लोडिंग करूं। और अगर मैं डिस्चार्जिंग करता हूं तो मैं बॉडीली राइज करूंगा, चाहे कहीं से भी डिस्चार्ज करूंगा। मेरे दोनों ड्राफ्ट जो हैं वो कमती होंगे।
फॉरवर्ड भी और आफ्ट भी। तो ये मेरी बॉडीली सिंकेज या राइज हो रही है। फिर मेरा चेंज ऑफ ट्रिम जो है TFT है वो नीचे वाला है। अगर मेरा बाव नीचे जाता है तो TF का साइन प्लस होगा, और अगर बाव ऊपर उठता है तो TF का साइन माइनस होगा फॉरवर्ड में। टीए में उसका उल्टा उल्टा, जो TF का हो रहा है वो टीए का उल्टा। इन सबको टोटल अप करो, दिस विल गिव मी माय फाइनल ड्राफ्ट्स। Forward and final draft after. Hanji, any doubts on this? GML कैसे मिलता है? How do we get GML? KB plus BML is equal to KML. Similarly, KG plus GML is also equal to KML. Therefore, KB plus BML is equal to KG plus GML. So GML is equal to KB plus BML minus KG. KB is draft by 2. BML is L square by 12D minus kg given in the question will give me GML. This is if kg is given in the question, then we'll use this. If not given in the question, then BML is equal to L square by 12D. Not connected with this, but in some other case, transverse KB plus BMT is equal to KMT, and that is equal to KG plus GMT. Here KB is D by 2, BMT is breadth square by 12D minus kg will give us GMT, the GM of the vessel. This is not used in this question, but something else. If it is asked, then you can use this.
Same thing if you are given MV hinge ship. Then how do you handle it? Now the data will keep changing and you've got hydrostatic particulars with you. So data changes now. Data is not constant. So the formula in MV hinge ship is trim is equal to LCB minus LCG over MCTC into 100. This is the formula which is used. So if LCB is greater than LCG, trim will be greater than 0. That means trim is positive. If LCB is less than LCG, trim is less than 0. That means trim is negative. Positive trim is stern trim. Negative trim is head trim, down by head. If LCB is equal to LCG, trim is 0. Vessel is on even keel. Trim is 0. So if I am given forward draft, I am given aft draft, then I can find out the mean draft, which will be forward plus aft divided by 2. I do also know the trim. For this mean draft, I can calculate the LCF from the hydrostatic tables. LCF for the mean draft. Then I can calculate the hydrostatic draft. Will be equal to draft aft minus for stern trim plus for head trim, correction, trim into LCF upon LVP. LCF is the same LCF which you have found out for main draft. This gives you your hydrostatic draft. For your W final, you will find out the final hydrostatic draft. You will find out the final trim. You will find out the TA, which is trim into LCF upon LBP. Similarly, TF is equal to final trim minus TA
You apply the TF and TA to the final hydrostatic draft. Final hydrostatic draft minus TF plus TA will give you final draft forward, final draft aft, final drafts forward and aft. This is for a stern trim. If you were a head trim, then this will become plus, this will become minus. Plus, minus. सर ये WF डिस्प्लेसमेंट क्या है? WF कहाँ पे है? Final displacement. ओके, The final displacement. Corresponding to that, you will get the final hydrostatic draft. Though corresponding to you'll find the final trim from the formula. So this can be used for initial, it can be used for final. Using this final trim, you will now calculate the TA, the change in trim aft. हाँ जी. Any doubts in this MV Hinship? MCTC changes with density. So therefore, MCTC, if you are in dock water, will be MCTC salt water divided by 1025 multiplied by density dock water. So you will change the density, the MCTC to the density wherever you are going, where the trim is to be found out and where the drafts are to be found out. So that's सर MCTC की वजह से फुल फॉर्म क्या कहते हैं? moment to change trim by 1 centimeter. Moment to change trim by 1 centimeter. It's a moment. मूवमेंट. सर ये नंबर 3 में फाइनल डिस्प्लेसमेंट जैसे पता है तो उससे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकल जाएगा और उसके बाद फाइनल ट्रिम वो फॉर्मूलेस के थ्रू निकलेगा. मतलब वो ये जो फॉर्मूला था लंबा वाला ट्रिम का, उसके फॉर्मूले से निकलेगा. ओके, डिस्प्लेसमेंट इनटू LCB माइनस LCG बाय MCTC वाला. करेक्ट. ओके, उससे निकलेगा. उसके बाद फिर उस पे TA अप्लाई करें. फिर TA अप्लाई करोगे. हाँ, इसी ट्रिम में जो अभी जस्ट आया है उससे. अभी जो आया है उसी से निकलेगा. ओके, फिर TF निकालोगे, विच इज वही ट्रिम माइनस TA, और फिर इस वाले फॉर्मूले में लगा दोगे. ठीक है सर.
Similarly, इस फॉर्मूले में तो कहीं यूज नहीं होता, but in your cargo paper calculations you will be using TPC. So TPC also changes with density. TPC dock water is equal to TPC salt water divided by 1.025 into density dock water. So TPC भी डेंसिटी से बदलता है. सर ये सेकंड फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट इज इक्वल्स टू कहाँ पे? सेकंड पॉइंट. Okay. Hydrostatic draft is equal to draft aft minus या plus correction, minus for a stern trim plus for a head trim, and that is trim into LCF upon LBP. ओके सर. Both MCTC and TPC change with density. Nothing else changes with density. सर डेंसिटी के चेंज होने से अंडर वाटर वॉल्यूम चेंज होगा, तो उससे केएम वगैरह भी चेंज होगा ना? नहीं, KM does not change. It is KM, draft dependent. it is draft. The KM जो your because you have to keep it in mind basically that the the change in the draft is so marginal that the change in the KM is neglected, and therefore it is assumed that it is constant. Okay. Okay. So basically, these are the couple of formulas that we are always going to be using. All right. So I want you to go through the app, the MMD exam app, and I want you to do the Simpson's question from that
phase 1 papers, latest going backwards. And I want you to pick out the difficult questions, Simpsons ke, during this week. Please finish that off. If you've already done it, then it's fine. सर, डू यू हैव एनी आंसर्स आल्सो दोस को, ताकि No, हमें पता चलता रहे सही किया है गलत किया है? नहीं, I don't have answers to that. But the only way to do it is basically कि आप two of you, three of you do it together and आपस में group में just share the answers with you each other. That is the simplest and the best way I have advised to every batch. Because I don't have the answers with me, because I concentrate totally on the solution methodology. मैं methodology पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ. Not that answer पे नहीं देता हूँ. I'm not trying to say that. But अगर method सही होगा तो then आंसर के चांसेस खाली बचते हैं जो कि क्लेरिकल एरर ना हो जाए उस पे है. बट आपका मेथड अगर सही है and principally you are correct, तो I lay more stress on the principal part of it. मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ as compared to the answers. Answers are important. I'm not trying to say that. So इसलिए my advice to you, all of you, is the moment you do a particular question, just post the answer on the group. Is this the answer? In case there's a doubt. अगर आप कोई 2-3 लोग हो आपस में तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है. तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. Then तो but this is the other way to do it. Because like for example कोई खतरनाक क्वेश्चन आ जाता है. Like today in the phase 2 class, जो अप्रैल में जो एग्जाम हुआ है उसमें एक खतरनाक क्वेश्चन आया है फेज 2 का on radar plotting, advanced radar plotting में. So they picked it up. That was discussed today in the class. So I want you to do that because जो latest आ रहे जो ट्रेंड चल रहा है, जो मार्च में एग्जाम हुआ, जिसका भी रिजल्ट आया था पीछे, pick up those questions, ask in the class to the respective faculties, सबसे पूछो, so that it can be cleared out.